with the new chapter, Unit 4, Mangoes Round the Year. With this chapter, we have started learning of the food items. How the food items get spoiled. वो कैसे खराब होती हैं? How much time the food items are taking to get spoiled? What are the signs? How can we come to know that the food is spoiled? So all these things we have already completed in the last video. Now today we are going to start with the new topic, and that is we will learn today about bread packets and different other packets. How we can come to know that item is not good for us and that item, whichever food item we have purchased, that is expiry date and that is spoiled already. So today we will learn with a short story. Here is one short story. BG returned the bread. Here we are talking about one BG. It means suppose we will take any student नीतू. ठीक है, नीतू की बीजी है यानी दादी हैं. दादी को वो क्या बोलते हैं? बीजी कहते हैं. सो नीतू की जो दादी है, जो बीजी है, शी वेंट टू द मार्केट टू बाय द ब्रेड पैकेट. वो ब्रेड का पैकेट लेने के लिए मार्केट जाते हैं. एंड देयर ऑन द शॉप देयर वाज टू मच क्राउड. इट मीन बहुत ज्यादा क्राउड थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी. क्राउड इट मीन्स भीड़. So many persons were there on the shop. So shopkeeper has asked to the BG and BG told she wants to buy the bread packet. So shopkeeper has taken one bread packet and given to the BG. BG has seen something on the packet and she given back. She returned back. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? Returned back. Why she returned back? What she has seen on the bread packet and why she has returned back. So that is the main lesson of this story. That is BG may have found that the expiry date, which date? The expiry date of the bread is lapsed. Lapsed यानी वो date already complete हो चुकी है. She has observed on the packet, on the bread packet, there was a date written, expiry date. What is the word? Expiry date. जो expiry date होती है, that BG has noticed that expiry date is already went. Suppose on the packet it is written 5th June. Okay, and BG has went on the 6th June. So what is this? 5th June and 6th June. This is the expiry date. When BG went to buy it, the date was 6th June. So this is the bread which is already expired on the 5th June. So how can she purchase on the 6th June? That's why BG has noticed the expiry date of the bread and she noticed that that date of the bread is already lapsed. यानी वो date already pass हो चुकी है. And yes, observed black velvety spots on the bread. What other thing she has observed? जब उसने observe किया bread के पैकेट को, तो BG was noticing that there are some black velvety fungus. मैंने आपको बताया था last video में we have discussed about the fungus also. The fungus sometimes it is black, white or somewhere green also. So what she observed? She observed black velvety fungus spots on the bread. उसने bread के ऊपर ऐसे black velvety spots देखे that were looking like a fungus. So she get to know that this bread is already spoiled. वो bread already spoiled हो चुकी है. So she returned back the bread. So with this small story, BG की जो story है, return back the bread. What we have learned from this? We have to see the packet and we have to observe the proper situation of the packet and the expiry date also. Then we can purchase anything. So here one more information that I want to share with you with the story which is connected and what we think, what things we have to take care whenever we are going out to buy anything. If suppose you are going to the market and you want to buy something, buy any packets, so which information you should notice on the packet. आपको पैकेट पे क्या क्या देखना चाहिए? Suppose you are going to buy milk. आप milk buy करने जाते हो पेरेंट्स के साथ. Any food packets like chips, bread. Then we can take yes, these are the items that we can take: milk, chips, bread, anything. If we will take whatever packets we are taking, suppose Maggi, you all like Maggi, I know, right? So if suppose you are taking these packets, what informations, which things you can notice on the packet? After noticing that things, you can purchase the packets. So that things which are written on the packet, all these informations are already written on the packets. ये जो भी हमने packets लिए हैं, all the packets are having this type of information. Just we have to observe it and then we have to buy. So which are the things which are already mentioned? That is price. सबसे पहली चीज तो price ही लिखी हुई होगी. Suppose you are going to purchase a chips, so it will written like this or like this. ₹5 is the charge of the chips. Then weight of the chips. Suppose we will talk about chips only. ठीक है,
अगर हम चिप्स के बारे में बात कर रहे हैं एंड चिप्स इज अराउंड 25 ग्राम इन वन पैकेट, एक पैकेट में अराउंड 25 ग्राम जितना होता है. इफ सपोज वी आर बाइंग ब्रेड सो इट इज अराउंड 100 ग्राम टू 80 ग्राम. देन मैगी इफ वी आर बाइंग अ स्मॉल पैकेट so it is around 30 to 40 grams. Likewise we can see the weight also of the particular item. Then ingredients, yes, ingredients it means the things which are already kept in the item, already जो उसमें डली हुई है. How this item made? Bread कैसे बनते हैं? Wheat or otherwise maida it is used, water it is used, somewhere in some breads egg is also used, yeast is also used. So these are the different things which are used to make this item. So ingredients are also written on the packets. We can observe in that sugar, then oil, then maida or wheat, with whatever things are used in the packet, then water. All these things will be mentioned as the ingredients on each and every packet, whatever we are buying. Then date of manufacturing. Yes, manufacturing it means when this packet has produced, यानी कब वो बनाया गया था, produced यानी कब बनाया गया था, that date will be written. Then date of expiry, yes, when this packet will be expired, आप कौन सी डेट तक इस पैकेट को यूज कर सकते हो, that also will be mentioned on the packet. If suppose जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था ब्रेड का, okay, if manufacturing date, if we will write manufacturing date, suppose it is 1st June and we can use bread around for 4 days. तो अगर हम उसका एक्सपायरी डेट लिखते हैं so we will write around 4th June. So this type of dates will be mentioned on the package. ऐसे मैन्युफैक्चरिंग और उसके अलावा जो जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सपायरी डेट्स, all the things are already mentioned on the package. So this thing we can observe. Somewhere ऐसा भी होता है कई बार टाइम ड्यूरेशन फॉर एक्सपायरी, टाइम ड्यूरेशन भी लिखा हुआ होता है. सपोज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 3rd June. Okay, and it is written it will be used for 3 months. ऐसा लिखा हुआ है उस पैकेट में, it will be used for 3 months. तो हम लोग 3 months काउंट करेंगे, जून, जुलाई, अगस्त. हम लोग ये 3 months उसको यूज कर सकते हैं. आफ्टर दैट अगस्त मंथ वी कांट यूज दिस प्रोडक्ट. वाई? क्योंकि उसके 3 महीने की डेट पूरी हो चुकी है. So there are some packets who are giving the proper information of manufacturing and expiry. Otherwise they are giving the time duration. वो हमें टाइम ड्यूरेशन बता देते हैं कि हाउ मेनी डेज और हाउ मेनी मंथ्स यू कैन यूज इट. सपोज इन चिप्स पैकेट इट इज रिटन अराउंड बेस्ट बिफोर 30 days, मतलब 30 days तक आप उसको यूज कर सकते हो. आफ्टर 30 days it will be spoiled. Like this information you have seen, right? अब आपको एक एक्टिविटी करनी है. यू हैव टू गो टू द मार्केट एंड परचेज वन स्मॉल एनी पैकेट. You have to purchase any packet and you have to observe all these things in that packet. Price, what is the price of the product, then what is the weight, how much gram is there in that packet, then what are the ingredients which are kept in that, date of manufacturing, when it is manufactured, then expiry date if it is written, or otherwise you have to observe the time duration of expiry. Time duration आपको observe करना है. Best before 30 days, best for 3 months. Likewise these things are already mentioned in the package. As a customer, as a consumer, whenever we are going to the shopkeeper, we have to observe these things that is our duty to observe. Okay, so this was the thing that we have to learn in this topic. So now let's start with the next topic. How you will come to know that food is spoiled. आप कैसे उस फूड को देखकर जज कर सकते हो how the food is spoiled and whether what is the situation, क्या कलर हो जाता है उसका, which type of smell is coming. So here we will do one activity, the practical activity that you can also do. Here you have to take a piece of bread. आपको एक bread का piece लेना है, a small bread, or otherwise take a roti. Bread will be better. You just take a bread and keep in a box. आप एक अपने किसी बॉक्स में उसको पैक कर दो and sprinkle some drops of water on it. उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप पानी के आपको स्प्रिंकल करना है, यानी डाल देना है, and pack that box. Now what you have to do, regularly you have to open that box and check the situation of the bread. अब आपको ब्रेड की सिचुएशन देखनी है रेगुलरली. आपको दिखने में कैसी लगती है, व्हाट इज द स्मेल, व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्रेड, इफ एनी चेंजेस केम और नॉट. सो दैट एक्टिविटी वी हैव टू परफॉर्म. सो हियर इन दिस एक्टिविटी वी विल डू सम एक्सपेरिमेंट. हम एक्सपेरिमेंट भी करेंगे कि फर्स्ट डे में क्या चेंजेस हुए, देन सेकंड डे विच काइंड ऑफ चेंजेस हैपेंड इन द ब्रेड. सो हियर वी विल स्टार्ट विद द
So how does food get spoiled? Food कैसे spoiled होता है? Changes in bread or roti. Here which activity we are doing? The changes in bread. हम लोग bread की activity कर रहे हैं. How the bread is changing. Okay. So here I have packed one piece of bread in a lunch box. मैंने एक box में उसको पैक कर दिया है and I have kept sprinkled 2-3 drops of water. So first day when I opened the box, what happened? By the touch it was soft. हम लोग क्या bifurcation देखेंगे पहले वो बता देती हूँ. On the first day, second day likewise, by the touch we will feel, by the smell, by looking it and by the color we can recognize how much bread is spoiled. Okay. So first day, that by the touch it was soft only, light एकदम बिल्कुल थोड़ी सी स्मेल आना आपको स्टार्ट हो जाएगी. नॉर्मल यस, लुकिंग में हमको दिखने में वो कैसा लगता है नॉर्मल. द ब्रेड कलर इज नॉर्मल एंड द कलर इज ऑल्सो नॉर्मल. दिखने में भी वो नॉर्मल लग रहा है, उसका जो कलर है वो भी चेंज नहीं हुआ है, इट इज नॉर्मल. देन सेकंड डे बाय द टच सेम, इट इज सॉफ्ट, क्लैमी एंड सॉफ्ट, वो सॉफ्ट ही है. लाइक स्टिंकिंग स्मेल, स्टिंकिंग मतलब थोड़ी सी बैड स्मेल आने लगी है अब आपको, जो आपको थोड़ी वियर्ड सी लग रही है. वेलवेट लाइक वाइट लेयर, अब लुकिंग में कैसा लग रहा है, उसके ऊपर एक वाइट कलर का वेलवेट जैसा लेयर चढ़ना स्टार्ट हो गया. ऑन द ब्रेड सम वेलवेट वाइट लेयर इज गेटिंग स्टार्टेड एंड इट इज चेंजिंग द कलर. वो क्या होता जा रहा है, स्लाइटली वाइट होता जा रहा है. जो ब्रेड का कलर है वो स्लाइटली धीरे धीरे करके वाइट होता जा रहा है. थर्ड डे व्हेन यू ओपन द बॉक्स, ऑन द थर्ड डे द टच, व्हेन यू टच द ब्रेड इट वाज मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, यानी बहुत ज़्यादा आपको ओवर सॉफ्ट लगने लगा. वो कुछ अजीब सा ऐसे बोलते हैं ना, सम स्टिकी अमाउंट इज वॉज देयर ऑन द ब्रेड, सो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट. देन स्मेल, इट वॉज वेरी स्टिंकिंग स्मेल. व्हेन यू ओपन इट बहुत ज़्यादा स्टिंकिंग स्मेल आने लगती है आपको. वेलवेट लाइक वाइट लेयर, द सेम सिचुएशन, उसके ऊपर एक वेलवेट का वाइट कलर का लेयर चढ़ जाता है. देन इट विल टर्न इन अ प्योर वाइट कलर. वो किस में चेंज हो जाता है, प्योर वाइट कलर हो जाता है. उस ब्रेड का पूरा वाइट कलर में चेंज हो जाता है. नाउ व्हाट विल हैपन ऑन द फोर्थ डे, टच में कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट जैसा लगेगा एंड वेरी सॉफ्ट, बहुत ओवर सॉफ्ट लगेगा. ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं वेरी सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगने लगेगा हमको. इट विल बी लाइक अ स्टिकी अमाउंट. देन स्मेल, इट विल बी वेरी स्टिंकिंग. द स्मेल विल बी वेरी स्टिंकिंग, यानी बहुत गंदी सी स्मेल आने लगेगी. बाय लुकिंग इट विल बी ग्रीनिश white colored grass you will able to see. आपको क्या दिखेगा, greenish white colored grass. The greenish white colored grass you will be able to see there. वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, छोटे छोटे अमाउंट में छोटे छोटे greenish white कलर जैसा ग्रास क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा. एंड what will be the color, it will be greenish white. क्या कलर हो जाएगा हमारी ब्रेड का, greenish white. Okay. Then on the fifth day I have observed the same situation, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, स्टिंकिंग स्मेल है. Here the proper greenish हो जाएगा उसका कलर. क्या हो जाएगा, proper greenish colored grass, proper greenish colored grass. By looking I can see there is small amount of grass which is totally of greenish color. Here the color will be changed into totally green. वो कौन सा कलर हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रीन कलर हो जाएगा. At the sixth day सेम सिचुएशन, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत चिपका स्टिकी जैसा लगता है. देन इट विल टर्न लुकिंग लाइक अ ग्रीनिश ब्लैक. कौन सा कलर हो जाएगा अब इसका, ग्रीनिश ब्लैक ग्रास, ग्रीनिश ब्लैक ग्रास हो जाएगा. एंड हेयर इट विल बी ग्रीनिश ब्लैक कलर, पूरा का पूरा ग्रीनिश और ब्लैक कलर का हो जाएगा. आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो. सो हमने यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया, 1 2 3 4 5 6 days we have observed a small piece of bread and we have seen the situation, what is happening, which kind of smell is coming, what is happening to the color, how it is looking. क्या हो जाता है 4 5 6 days, जो लास्ट के 3 days हैं उसमें क्या हो जाता है, the bread is getting more greenish fungus type that I told you in the first video. हमारे पास जो ग्रीनिश कलर का जो ग्रास क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ये कलर चेंज हुआ है, that is all because of fungus. That fungus is creating in bread and roti. Already I told you in the last video this. What is this? Greenish white grass, greenish black grass. धीरे धीरे करके वो फंगस ब्लैक कलर में टर्न आउट हो जाता है. As I told you, the fungus will be black और white. वो ग्रीनिश में से धीरे धीरे करके ब्लैक कलर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है.
So here, this is the situation of bread. How the bread is changing the color, the smell, all the things we have learned in this activity. I hope you got this activity properly. You can perform this at home. But whenever you are performing this activity, after completion the experiment, you have to wash your hands properly with the soap. Okay. Now in next video, we will continue with the next topic. Thank you.